Welcome to the lecture series on basic mathematics. I am Dr. Muhammad Mazharul Haq. In this series, we already has covered logarithm, determinant, and matrices. Now, the last portion of this algebraic part is partial fractions. So, in some few lectures, we'll see how to simplify the partial fraction and what are the proper and improper fractions. So, in this lecture, our objective is to add two algebraic equations, and the process of adding fraction will reverse and try to find out the partial fraction of any expression or any fraction with the help of our reverse process. We'll start by adding two fractions first. We'll take two fractions and convert that into a simple fraction. So for example, suppose we have this first fraction 3 by x minus 2, another fraction 2 upon x plus 1. How to add these? See, addition, we are taking the multiplication of this term to this term. कैसे multiply करते हैं हम? So this term into this term, and likewise this term into this and this term into this. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है. ये दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है और इस डिनोमिनेटर को इसके साथ, ये डिनोमिनेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है. गॉट? So if we open this bracket 3x plus 3, likewise 2x minus 4. So this term we can simplify by taking x के term एक जगह collect करेंगे, बाकी constant term एक जगह. So 3x plus 2x 5x, 3 minus 4 minus. What we did here, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने दो फ्रैक्शन को एक टर्म में एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, राइट? So partial fraction means what? By converting this such type of fraction into this partial fractions. So our main goal is what? Whenever such type of expression is given, we require this expression. How to find that? कैसे find out करना है वो देखेंगे हम. But see, these two are nothing but the equal. दोनों क्या है? Equal है. The partial fraction for this, you can say, is these two terms, right? Okay. Now start to find out the partial fraction. Suppose this is our fraction term. इसको क्या करना है? Just consider these two denominator factors are there. So just two terms will be there. Suppose some numerator we don't know, some numerator we don't know for the second one and the first one. लेकिन important चीज क्या है? The denominator must be in a linear factor. Linear factor में होगा पहले. First we'll see the linear factor, then we'll see the higher order factors. So to find out a and b, how to find out a and b? Just multiply the same term to both the sides. For all, these two are equal, keep in mind. So our goal is to find a and b. Now multiply both the terms by this same denominator, x minus 2 into x plus 1, and this here x minus 2 into x plus 1 to first term also, to the second term also. So see, if we multiply here, these two terms will cancel out, x minus 2, x minus 2, x plus 1, x plus 1. And here, how? This x minus 2 and this x minus 2 will get cancelled. This x plus 1 and this x plus 1 will get cancelled. यहाँ पे क्या होगा? This x minus 2 और ये x minus 2 cancel हो जाएगा. And here this x plus 1 and this x plus 1 will get cancelled. So what remains? क्या बचेगा? The only term remains here, left hand side is 5x minus 1, and this side a into x plus 1 and this b into x minus 2. So our goal is now simplified. अभी हमको simplified version में मिल गया. अब इसको simplify करके a और b का value find out करना है. We just have to find out these two values. क्यों? अगर ये दो values मिल गए तो हमारे पास ये total जो हमारा fraction है ये partial fraction में convert हो जाएगा. So to find out these values, we'll take this expression, right? So take this expression and put up, see the coefficient of each of the term. A, x plus 1, B, x minus 2.
अब यहाँ पर क्या रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ए बचेगा, और यहाँ पे क्या रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये बचेगा। ये हमको सोचना है। बाकी सी चूज x एज 2। यहाँ पे 2 क्यों रख रहे हैं? वाई शुड चूज? बिकॉज x इज इक्वल टू 2 अगर रखेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगा और हमको a मिल जाएगा। We can easily get the value. So let us substitute the value x is equals to 2. तो x is equals to 2 सिर्फ यहाँ पे नहीं रखना है, पूरी एक्सप्रेशन में x is equals to 2 रखना है। So put out x is equals to 2 here also, here also, here also, here also. So if we simplify this, this is 0, 2 plus 1 3, and this 5 into 2 10 minus 1 9. So this a is equals to 3. So what value? आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, a मिल गया हमको। अब b फाइंड आउट करने के लिए x इज इक्वल टू क्या रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू या क्या रखेंगे -1, राइट। x इज इक्वल टू -1 रखेंगे, सो दिस विल बी व्हाट -1 + 1 0। गुड। सो -1 पूरे इक्वेशन में रखना है हमको। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट 5 into -1 -1 a -1 plus 1 plus b -1 -2. So this -6 minus 5 into -1 -5 -1 -6. This is 0 -1 -2 -3. So this -3 to the -6, b is equals to 2. तो दोनों वैल्यूज मिल गए हमारे पास। विल सब्स्टिट्यूट दिस। अगर हम दूसरे वैल्यूज रखेंगे, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा? ये अनसिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आ जाएगा। उसको हम वापस a का वैल्यू फाइंड आउट करके रख सकते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन a और b हमको मिल गया है। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस a हियर, द वैल्यू ऑफ b हियर। द वैल्यू ऑफ a वी गॉट इज 3, तो a लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट a, and b value we got here, so no need to write b, so write out these values. So this will be 3 and 2. Good. Let us take another example. इसको partial fraction में करना है। So what is, how many factors are in denominator? x minus 3, x minus 1. So क्या करेंगे? This equals to a divided by x minus 3, b divided by x minus 1. Next क्या करना है? या दोनों साइड ये वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। Multiply this by x minus 3 into x minus 1 to both the side. दोनों साइड रखना जरूरी है। It is very important to write this each time. So x minus 3, x minus 3, x minus 1 कैंसिल हो गया। अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ। x minus 3 कैंसिल होके a into x minus 1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे x minus 1 कैंसिल होके b into x minus 3, right? देख लो एक बार। So this term will be there. So only the task is to just substitute the values of such x so that we are getting the values of a and b simultaneously. So b0 करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे x is equal to 3 रखेंगे, तो 3 minus 3 0, तो पूरे टर्म में रख दो। लेफ्ट हैंड साइड में कोई x की टर्म नहीं है, सो नो नीड टू राइट, 1 एज इट इज रहेगा, और ये वाली टर्म 1 x की जगह पे 3 minus 1 2, और ये वाली टर्म 0। So the value of a 2 को ये साइड ले लेंगे 1/2। अब ये a को 0 करने के लिए क्या रखेंगे? x is equals to 1 both the side। यहाँ पे x की कोई टर्म नहीं है, no need to worry। So just put up x is equals to 1। So this 1 minus 3 minus 2, this term is 0। So b value you got is minus 1/2। So put up the values here in place of a and b। So this term is 1/2 plus minus 1/2। Look at this again. This is a very simple example. So here the denominators, the halves are written in the denominator as 2's. The minus sign is moved to the front of the second fraction. These are some observations. First, you can write, instead of writing this 1/2, just write this 1/2 into x minus, and this minus, instead of writing like this, इस तरह लिखेंगे तो थोड़ा awkward लगेगा। Instead of writing this is also right, but instead of writing this, just write this like this, 1/2 into x minus 3
and this instead of writing plus into minus, write directly what is the resultant value minus 1 upon 2x minus 1, right? So finally we need to check the answer, cross verify also. You can by taking this reverse, you can get this value. If you are not getting this, then this means that your value of a and b are you are getting wrong. अगर ये टर्म से हमको ये टर्म नहीं मिल रही है, means what, a and b you are getting wrong. 1 by x minus 3 into x minus 1, you can factorize this by covering up. How? Just put up this x is equals to 3. Find the value of x that makes the factor under a equal to 0. X is equals to 3, put up. So here x is equals to 3 minus 3 minus 1, 2. And here this is what? 2 minus 1, 1. So this b value you are getting. And likewise, just omit this one. ये वाली टर्म को omit करके जहां पे 3 है x माइनस 3 वहां पे नहीं रखना है. ये दूसरा एक शॉर्टकट मेथड है. इसके अंदर हमको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी. यहाँ पे x माइनस 3 की टर्म को भी नहीं रखेंगे. ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1, 2. ये b मिल जाएगा हमारे पास. सॉरी, ये a मिल जाएगा क्योंकि हम x के a के नीचे वाली टर्म रख रहे हैं. सो दिस इज 1 by 2, 1 by 2. Likewise, substitute x is equals to 1. तो ये टर्म में नहीं रखेंगे और ये वाली टर्म में नहीं रखेंगे. So you will get minus 1 by 2. This is what? B. So this is also shortcut. ये shortcut method को मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूँ. इस टाइप में फ्रैक्शन में लिखना है और a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो जिस टाइप में 0 हो रहा है, यहाँ पे 3 रखने पे 0 हो रहा है, तो 3 रख देंगे. कहाँ पे रखेंगे? इसके डिनोमिनेटर में और इसके डिनोमिनेटर में 3 को छोड़ के. So 3 minus 1, 2. So here this is 3 minus 1, 2 हो गया, right? And this 3 minus 1, 2. So these are the values. Suppose this is example. दो फैक्टर है हमारे पास, x minus 3, 2x plus 1. We may have the factorize to find them. Now the denominator has two linear factors, no doubt. Numerator is a polynomial. The degree of polynomial is given by the highest power of x. ये एक important term है कि कोई भी term की डिग्री चेक करना है तो highest power of x चेक करना है. Highest power of x is 1. Here 1 plus 1 means दोनों को multiply करेंगे तो x square आ जाएगा. So this is 1. Here degree of the numerator is 1 and the denominator degree is 1 plus 1, 2. So this is a proper fraction. ये proper improper भी देखना है हमको. But today what we have seen is to find out the partial fraction for such type of expression like this and multiply the denominator with the left hand side and substitute the values of x such that a and b we got. These are some techniques to find out the values. Shortcut method भी हमने देखा था, right? So this is the way. और हम examples भी देखेंगे आगे. अगर दो से ज़्यादा factors हैं या तीन factors हैं, that also we'll see. So this is the way or the method to find out the partial fraction. इसको एक बार हम और एक बार next lecture में और एक बार देख लेंगे. Okay? So what we have seen is how to add two algebraic expression and how to find out the reverse way or partial fraction in that. Okay? Thank you.